Discovering Tut, the saga continues, part 3. Now we have seen that when Carter he investigated, he found that there were three coffins, and when he opened the first one, he found the garlands of these flowers, and he got the evidence that he was somewhere buried in March or April, and when he came to the last one, he ran into trouble. अब वो परेशान कैसे हो गया? The ritual raisins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. Now when he came to the third coffin, the ritual means religious कुछ ceremonial हिसाब से the raisins were there were some raisins means sticky substances which had hardened. वो जो raisins थे जो कि लगाए जाते होंगे डेड बॉडी पे, वो हार्ड हो गए, सीमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ इस सॉलिड गोल्ड कॉफिन. और इससे क्या हुआ कि जो उनकी डेड बॉडी थी वो कॉफिन से बिल्कुल चिपक गई, सीमेंटेड हो गई. No amount of legitimate force and no amount of proper force could move them. Properly जितना वो लगा सकते थे force, it did not move that mummy. Carter wrote later what was to be done. Carter ने बाद में लिखा कि क्या किया जाए. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the raisins. And sun, in Egypt, sun can be down like a hammer. और फिर कार्टर को एक आइडिया सूझा कि सन कैन बी वेरी गुड एंड इफेक्टिव इन दिस केस टू लूजन द रेजिन्स. उसने सोचा वो एक हैमर का काम करेगा. For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. And then he brought the mummy out in the blazing sun, in the flaming sun, जलते हुए sunshine में लाया. At what degrees? 149 degrees Fahrenheit. Nothing budged. But still nothing budged means means nothing moved. It only made slight movement. बहुत छोटा सा success मिले. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. And then he reported with a scientific detachment. Detachment means aloofness. और फिर उसने एक scientifically, objectively एक बयान दिया. He declared कि जो भी कंसोलिडेटेड, ये जो भी सूखा हुआ सॉलिडिफाइड जो भी मटेरियल है, इट कैन ओनली बी चिजल्ड अवे, कट अवे. ये इसे सिर्फ काटा जा सकता है बीनीथ द लिम्स, उसके हाथ पैरों के नीचे से, एंड द ट्रंक बॉडी के नीचे से, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. और अपने बचाव में, डिफेंस मीन्स अपने बचाव में, कार्टर हैड ओनली लिटिल चॉइस. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. And if he hadn't cut the mummy free, if he had not cut, and at that point अगर कार्टर ने मम्मी को फ्री नहीं किया होता उससे, thieves naturally would have certainly got into the chamber and circumvented the guards. They would have avoided the guards. Guards को धोखा देकर वो अंदर चले जाते, and ripped it away. Ripped it apart to remove the gold, and then they would ripped means tear away the body mummy forcibly to remove the gold. अब उसे जो है उसको अलग करना ही था, क्योंकि फिर thieves करते थे. In Tut's times, royals were fabulously wealthy. अब टट्स का जो टाइम था, उनका जो जब उनकी एम्पायर थी, जब उनका राज था, तो रॉयल्स किंग्स वर fabulously means they were extremely wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. और उन्होंने ये सोचा था कि वो जब अपने इस दुनिया से जाएंगे, they will take their riches, they will take all their wealth with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars. Now for his journey to the great beyond. For his journey to the great beyond means for his journey to the heaven, King Tut was lavished. He was given with glittering goods. उसके साथ सारे चमकदार चीज़ें उसके साथ में रखी गई. Okay, he was given generously. Lavished means generously. बड़े ज़्यादा तरीके से उसके हब्र में रखा गया. Precious collars. Now collars are necklaces, very very precious necklaces, inlaid necklaces. Inlaid necklaces are which are laid inside the smooth surface. बड़े अच्छे से inlaid, जिसमें stones रखे होते हैं. Bracelets, then rings, amulets. Amulets are ornaments wore round the neck or arm or waist to keep away the evil, जिसे तावीज़ भी कहते हैं, उसे कहते हैं एम्यूलेट्स. तो ये सारी चीज़ें रखी गई. अ सेरिमोनियल एप्रन, एक एप्रन भी उसके साथ में रखा गया. सैंडल्स,
sheaths for his fingers. Sheaths are coverings. Okay, coverings for his fingers and toes, and the new now iconic inner coffin and mask. और फिर एक symbolic inner coffin भी था और एक mask था, all of pure gold. So imagine all these things were there kept with him, and these all things were of pure gold. To separate Tut from his adornments, not to separate Tut from his decorations. Adornments means decorations. Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. अब उसको डेकोरेशन से अलग करने के लिए टट को उसके जो मेन थे कार्टर के, दे रिमूव्ड हिज हेड फर्स्ट, देन ही सीवियर्ड मीन्स कट ऑफ एवरी जॉइंट, फिर उसका मेजर हर जॉइंट को निकाला गया. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. And once they had finished, उसको निकाला, they had removed all the gold, then they reassembled. उसके बाद में उन्होंने assemble किया, उसको reassemble means दोबारा से जोड़ दिया, join कर दिया. The remains, the body on a layer of sand. अब उन्होंने उसकी कॉफिन में एक लेयर डाली सैंड की, in a wooden box with padding, कुछ पैड्स डाले, that is soft material, and concealed the damage, the bed where Tut now rests, and then they hid the damage. इससे उसकी जो बॉडी है नीचे से जितना भी उसको डैमेज हुआ वो सब उन्होंने उसको हाइड किया. They hid the damage, the bed where Tut now rests, और जहाँ पर अब टट की बॉडी रखी हुई है. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. और 1922 से 2005 तक कितना बदल गया. Archaeology has changed terribly. Archaeology, right? Archaeology is a science of studying ancient buildings or sites. SITES. Substantially means virtually. Materially सब चीज़ बदल चुकी है. Archaeology भी बदल चुकी है. In the intervening decades. Intervening means in between जितने भी decades गए हैं. Focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. Now archaeology focus less on treasure. अब वो ट्रेजर्स को कब देखते हैं कि व्हाट इज गॉट देयर, उनके अंदर है क्या, एंड दे फोकस मोर ऑन द डिटेल्स ऑफ लाइफ. दे वांट मोर ऑन द इंटरेस्टिंग डिटेल्स एंड द इंट्रीगिंग मीन्स दैट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल. कुछ भी अनयूजुअल, कुछ मिस्ट्री होती है किसी की डेथ के साथ, दे आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. अब आर्कियोलॉजी जो है बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े रिफाइंड टूल्स यूज़ करती है इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, एंड दे टेक द हेल्प ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.